Hey guys, so in the previous video part 1 we understood the basic concepts and terms related to the chapter. What are constants, variables, coefficients, terms, how to form algebraic expressions, and what are algebraic equations, how algebraic expressions and equations are related to each other, given, and how to find the solution of the given equation. In today's video we are going to solve a few more problems based on finding the solution of the equation, and then we'll learn more about linear equations in one variable, linear equations in two variables, and we'll solve a few interesting real life problems as well. So let's start this. So here you can see solution of the, we have to find the solution of the given equation. The equation says in the equation 2m equal to 8, m equal to 4 is a solution. So we have to prove that m is equal to 4 is a solution. Basically we have to prove this. Okay, so let's take the left hand side part, 2m equal to 8, substituting to this 2m equal to 8, substituting the value of m as 4. So here you can see 2 into 4 equal to 8, 2 4s are 8. It's simple, right? Left hand side equal to RHS, both the sides the value is same, that is 8. So m equal to 4 is a solution of the given equation. If you remember in the previous video that m equal to 5 was not the solution of the given equation because that was not satisfying both the sides or the value of the equation, but here it is. Okay, so moving ahead, I have a few questions, like 3 questions as your homework. I want you to write them down and solve them, and try commenting the answer. Okay, putting the answer in the comments, okay, section. Let's move ahead. So now we have linear equations in one variable. We are going to talk about linear equations one variable. I know most of you already aware of linear equation one variable because you have learned in previous classes, but we are going to revise a few things first and we'll move ahead. So this is the general form of the linear equation in one variable, ax plus b equal to 0. Here you can see x is a variable here. So one single variable you see in this equation, okay. A is the coefficient of x and b is a constant here. Now think about it. If I take this b as 0, still this equation will be like ax equal to 0 or any constant, right? Okay. But if I make this a as 0, if this a as 0, then this ax part, that is 0 into x, will also become 0. Then this equation will not be anymore a linear equation in one variable, okay, because x will get 0. That's why here in this equation there is one condition, and that is that a cannot be equal to 0. Okay, a cannot be equal to 0. Let's see a few more examples. X plus 4 equal to 9. Here you can see one variable, and this you can solve further. Similarly, x minus 2 equal to 7, one variable. X by 3 equal to 4, one variable. 4x equal to 24, one variable. Similarly here and here, right? So in the equations where you see only one variable, that is called linear equations in one variable, with one more condition, with power 1. If the power is not 1, then that will not be called as linear equation. Okay, linear equation means power 1, here power 1. So when we plot the graph for this equation, the graph will be a straight line. Okay, the graph will be a straight line, something like that. Okay, let's move ahead, and now we have linear equation in two variables. Okay, linear equations in two variables. Now when I say two variables, what does it mean? यहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, राइट? इट्स दैट सिंपल. So using variables like x and y, we can use any letters from A to Z. Remember, we can use any letters from A to Z. It's completely fine. Using variables like x and y for the two numbers, we can form the equation. We can form the equation, that is, for example, x plus y equal to 7. Now this is an equation in two variable, because here two variables are used, x and y, and we can find many values of x and y satisfying this equation. For example,
one second. I said we can find infinite values of x and y to satisfy this equation. How? Let's say हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बोथ द साइड्स शुड बी बैलेंस्ड, राइट? दोनों बैलेंस होते हैं. LHS इज गोइंग टू बी इक्वल टू RHS, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज एल्जेब्रिक इक्वेशन. अगर ये इक्वेशन है तो दोनों साइड इक्वल होंगे, या फिर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा. लेट्स एज्यूम द वैल्यूज ऑफ द x एंड y. नाउ 7 चाहिए हमें, इस साइड 7 है और यहाँ पे हमें फॉर्म बनाना है इनका वैल्यूज का. सी इफ आई टेक x as 1, then what do you think will be the value of y to become it to make it 7? It will be 6, right? 1 plus 6 equal to 7. Similarly, if I take 2, then it will be 5. If I take 3, then it will be 4. If I take 0, then it will be 7. If I take 0.5, then it will be 6.5, right? One second. 6.5. I can take infinite number of values to make it 7. And that's how it will satisfy the equation, and that's how they will be known as the values or solution of the equation. Okay, and one more thing is there, I can specify it in another way also. Let's see here. If I say values of x and y greater than or equal to 2, so in this form, if I take x and y value greater than 2, okay, I'm saying x and y like अलग अलग है, ठीक है, एक साथ नहीं है, डोंट वरी. तो x का भी वैल्यू 2 के साथ 2 से ज़्यादा होना चाहिए और y का वैल्यू भी 2 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, नाउ सो कैन यू टेक दिस एज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? No, right? Because here it is 1, that is less than 2, so we cannot take this. In this equation here equal sign I have used, okay, equal. So we can take this because here 5 is greater than 2 and 2 is equal to 2. We can take this also as a solution because 3 is greater than 2 and 4 is greater than 2. We cannot take this as a solution of the equation because यहाँ पे 0 है. तो IS1 में we can form the conditions to get the solution of the equation. Okay, let's move ahead. Now we have general form of equation. Okay, linear equations in two variable का general form क्या होगा? हम इसे ऐसे लिखते हैं, ax plus by plus c equal to 0. यहाँ पे x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant. Now what do you think? यहाँ पे अगर c का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या क्वेश्चन पे कोई चेंज आएगा? No, right? It will still be linear equation in two variable. But यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 होता है तो ये तो एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल चेंज आएगा. बट अगर यहाँ पे a और b एंड c, पहले तो ये रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे a और b 0 नहीं हो सकते हैं बिकॉज a और b अगर 0 होते हैं, okay, let me explain you this with the example. Now here a b c are real numbers, पहले तो ये क्लियर है, ठीक है. अभी सपोज अगर मैं a को 0 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. 0 इंटू एक्स क्या होता है, टेल मी? दिस इज 0 ओनली. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, राइट? तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. नाउ सपोज इफ आई टेक b इक्वल टू 0, देन दिस विल बिकम ax प्लस b की जगह पे 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0. नाउ ax, this will become 0, right? 0 into y is 0. Any number is multiplied with 0 is 0. Here this also becomes equation in one variable. So simply means that a and b cannot be equal to 0. Got it? I hope you got this. Okay, now few examples. यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है. आप देख सकते हैं 2x एज ax प्लस by कंपेयर करेंगे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिखेगा. यहाँ पे भी सिमिलरली व्हेन वी सॉल्व लाइक टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो हम उन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. क्योंकि देर आर अ फ्यू मेथड्स लाइक यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जहाँ पे आप a1 b1 ऐसे कॉन्स्टेंट्स का कोफिशिएंट्स का यूज करते हो. ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल, एक्चुअली यू कैन से रियल लाइफ एग्जांपल्स, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मच मोर क्लियर. ओके,
Okay, so here there are two friends, Dheeraj and Kunal. Actually, they are my class students only. Okay, huh. So had five sandwiches together. Okay, दोनों के पास together पांच five sandwiches हैं. How many sandwiches did they have individually? अभी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इंडिविजुअली कितना है, बस पूछा गया है. ठीक है, लेट्स मेक कॉम्बिनेशन फर्स्ट. ये धीरज है, ये कुणाल है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. ये हमारा सैंडविच, सपोज इमेजिन सैंडविच है, बहुत अच्छे फ्रेंड है. धीरज बोलता है अच्छा चलो एक कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 आने चाहिए टोटल, पहले मैं एक लेता हूँ, तुम 4 ले लो. ठीक है, फिर धीरज बोलता है नहीं, कुणाल बोलता है नहीं यार मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. तो धीरज बोलता है ठीक है मैं एक और बढ़ा लेता हूँ, तो 2 कर लेता हूँ, तुम्हारे पास 3 बचेगा. कुणाल बोलता है नहीं आ रहा है अभी भी, आई एम नॉट लाइकिंग इट, ओके आई इट शुड बी इक्वल. तो कुणाल धीरज बोलता है ठीक है तुम्हें नहीं पसंद, तो मैं एक और बढ़ाता हूँ, तुम्हारे पास 3 होगी, तुम्हारे पास 2. Kunal is like okay, and Dheeraj is like let me see one more condition here, maybe favorable. So 4 and 1, okay. Then he says okay I'll take nose sandwich and you take all 5, or he says like I'll take all 5, Kunal says you take all 5 and I'll take 0. So there are number of possibilities to get 5 sandwiches, right, as a combination, number of possibilities. Okay, so in this question if it is it has asked how many sandwiches did they have individually, then I would say the information is not enough. The information is not enough. एटलीस्ट मुझे कोई भी एक हिंट होना चाहिए धीरज या फिर कुणाल के लिए, जिससे मुझे इंडिविजुअल सैंडविचेस का, नंबर ऑफ सैंडविचेस का पता चले. अदरवाइज इक्वेशन द वैल्यूज और द इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर जो आते ही जाएंगे. ओके नाउ, सो अगर हम नाउ अभी एक हमें कंडीशन दे दिया गया है, धीरज had 3 more sandwiches than the number of sandwiches Kunal had. ओके, यहाँ पे कंडीशन है कि धीरज के पास 3 सैंडविचेस ज्यादा हैं कुणाल से. नाउ अभी इन कंडीशन में से लेट्स फाइंड आउट. यहाँ से ट्राई, चलो यहाँ से ट्राई स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कुणाल के पास 0 है, धीरज के पास 3 है, तो क्या ये 3 मोर का डिफरेंस है क्या? नहीं, नहीं है ना, राइट, गलत. ये 0 5, ये भी 3 मोर का डिफरेंस, ये तो 5 का डिफरेंस. यहाँ पे कुणाल के पास 1 है और धीरज के पास 4 है. क्या ये पॉसिबल है? यस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, राइट. बट यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया धीरज के पास 3 सैंडविचेस ज्यादा है, कुणाल के पास नहीं. तो ये वाला कंडीशन हमें एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा जो कि धीरज के पास 4 होंगी, कुणाल के पास 1 होगा, मतलब कुणाल से धीरज के पास 3 सैंडविचेस ज्यादा है. अगर इसे अब हम इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म करते हैं तो कैसा आ जाएगा. सपोज धीरज एज डी, हमारा मतलब कि वेरिएबल का 1 हो गया, कुणाल का k आ गया, इक्वल टू 5, दोनों के पास सैंडविचेस 5 थे. दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है कि धीरज के पास जो सैंडविचेस हैं कुणाल के सैंडविचेस से 3 ज्यादा हैं. ये देखो हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है. अगर अब भी हम चाहते हैं कुणाल के पास कितनी सैंडविचेस हैं, तो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस फर्दर एंड गेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ द sandwiches, number of sandwiches for Kunal. Got it? That's how we frame the linear equations in 2 variables, and that's how we solve them. And we have a few methods called like elimination and substitution methods to solve these equations that I have explained in part 5, part 6 and part 7 videos. So watch that, and I hope you understood the concept here. In the next videos, we'll discuss the graphical method to solve these simultaneous equations. Thank you so much guys.